देखें स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी। जी मायदा क्वेश्चन पढ़े। A loudspeaker is built into the side of a swimming pool. The loudspeaker produces sound waves in the water of wavelength 0.25 meters. The frequency of the sound wave is 6.0 kilohertz. Calculate the speed of the sound waves in the water. जी you have to calculate the speed of sound wave in the water. सर फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, इससे हम सबसे पहले वो फाइंड कर लें अगर जी जी क्या फाइंड कर लें? v टाइम equals एफ oh लैम्डा we नहीं, have to find the speed of the wave ना. So तो v पहले टाइम a loudspeaker is built into the side of the swing. The loudspeaker produces a sound of wavelength. Lambda is given, frequency is given. We just have to find speed. So V equals F lambda. F is 6 kilo. Lambda is 0.5. Check करें 0.25. चेक किया? जी मायदा क्या आंसर है? सर मैं कैलकुलेटर खोल रही थी, मैं चेक करने लगी हूँ. Okay, 6 10 raised to power 3 into 0.25. $1,500. Okay, the answer is 1500 and unit is meter per second. G. Abdullah, state a typical value for the speed of sound in air. 350 Good. Around not 350. 350 ले सकते हैं. 330 340 350 था या 330 350 था. Something 300. कल ही हम last time मैंने ये देखें 300 भी given होता है. 340 है. Yes, 340. Okay. So the answer is 40, 330, 350 मीटर भी पे से is reasonable. So 340 meters per second. State and explain for the sound produced by the loudspeaker how the wavelength of the sound in air compares with the wavelength of sound in water. So, Sir, it is less छोटा in air. what about in water? It's more. Why? Now we have, because we have to state and explain. So, how or wavelength is greater in water? Because we know that V F lambda, whenever there is a change in medium, the frequency remains. Whenever there is a change in frequency, so E proportional to the lambda. Now we know that in water the greater than air, so we greater. तो हम कहेंगे the wavelength of sound is smaller in air. Abdullah zara mic off. The wavelength of sound is smaller in air, smaller air, water. Next is sound is a longitudinal wave. Explain what is meant by the longitudinal wave. Abdullah.
सर लॉन्गिट्यूडनल वेव था सर जिसमें वो पैरेलल वाइब्रेट करते हैं. हाँ, वेरी गुड, इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल, ठीक है। तो द दूसरा वे, में ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर. हाँ वेरी, द वेव इन विच wave oscillation are of molecules या particles are parallel direction 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 of, or the wave in which oscillating particles are parallel to the direction, or it consists of and rarefaction of compression and rarefaction. Next is the sound emerges from loudspeaker, the gap. The sound diaphragm as it passes through the gap. State how the width of the gap affects the diffraction. D. Imaida, what is the condition for diffraction? Diffraction क्या होती है? Maida, Sir, the wavelength must be greater than or equals to gap gap width. जी. gap. अब उन्होंने पूछा state how the width of the gap affects the diffraction. तो हम कह सकते हैं कि इतनी ना बड़ी जो होगी गैप गैप तो ज़्यादा डायफ्रैक्शन होगी. जितना गैप बढ़ता जाएगा there will be less diffraction. ठीक है, कहते हैं wider wider the gap wider the gap lesser diffraction. Wider the gap the diffraction. जब भी डायफ्रैक्शन को आए तो आप अपने कहें कि आप डोर में से, अगर डोर का साइज बड़ा होता जाएगा then easy, अगर डोर का साइज जो स्मॉल होगा साइड विद एजेस विल डायफ्रैक्ट. बस ये क्या करेंगे, अपने आप को आप कंसीडर करें कि यू आर द वे एंड डोर है उसमें से आपने पास होना है. डोर इज वाइडर यू कैन पास थ्रू, द डोर इज स्मॉल it causes a. State how the wavelength of the sound affects the diffraction. जी बचे, wavelength क्या होगी, greater the wavelength greater will be the diffraction. तो हम कहेंगे directed directly proportional या directly related. ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब है गैप कम होना चाहिए और वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए. तो इट कॉजेज, तो ऐसे लिख देते हैं फॉर डायफ्रैक्शन. तो यहाँ से क्या बनता है, डायफ्रैक्शन के लिए जो गैप है वो कम होना चाहिए और जो लैम्डा है तो इट विल कॉज मोर डायफ्रैक्शन. जी अब्दुल्ला, ये पार्ट पढ़े. G. The pitch of a sound wave increases. Take one box to indicate the change that occurs. Pitch change होता है frequency pitch increase हो रहा है ना तो frequency increases.
ओके, तो ये बस आप याद रख लें, द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन पिच एंड so pitch of the sound increases, it means pitch directly proportional to the frequency. Pitch increases, frequency also in last answer. Or loudness. Loudness depends upon the amplitude. Loudness जो है, loudness एक फैक्टर आप याद रख लें, पे डिपेंड करता है. Loudness depend upon the area of vibrating body. Also, loudness depend upon distance from vibrating body. From vibrating body. Normally से ज़्यादा पूछ loudness depend upon the loudness of the sound wave in so amplitude also in. Next is figure 6.1 shows an astronaut and a spacecraft on the surface of where there is here a piece of a machinery. The spacecraft produces a loud sound of frequency 12,000 hertz. Yeah, frequency is given. Take one box that indicates the reason why the astronaut can't hear this. G. Maida. Although the frequency less than 20,000 hertz, लेकिन वो कह रहे हैं कि नोट जो है आर नॉट हियर द. Second. जी. Second. सेकंड. हाँ, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. वो साउंड नीड्स ऐसे भी हो सकता है. साउंड और एंड इन वैक्यूम देयर इज नो मीडियम. क्या. और नेक्स्ट इज some training some training for space travel is carried out under water. State an approximate value for the speed of sound in water. Ji Abdullah, of sound in water is So 100 क्या हुआ? 100. 1500. 100 So 100 kilometers. by 1500. हाँ, इसमें हम लिख सकते हैं the range is 1300 to 1500 में लिखता हूँ ज़्यादा. ठीक है. तो गैसेस में हम कितनी लिखते हैं? 140. लिक्विड या लिक्विड में हम लिखते हैं अराउंड 100 अप्रोक्सीमेट. ठीक है. और सॉलिड्स में मेटल्स में around 5000 meters per second. Next, calculate the wavelength of water of sound wave of frequency. Frequency is given, you have to find out the wavelength. V equals F lambda. Lambda equals V by F. E is the speed is 1500 हमने जो सेट की है. और frequency is 12 kilo mean 1000 12,000. So will be cancelled out of or 120. Correct? There's 0.125. 0.125 is the answer. 0.15 significant 0.13 and the unit of wavelength is गलती हुई आपने यूनिट साथ लिखनी है मीटर पर सेकंड. ठीक है. नेक्स्ट इज
Okay. Figure 6.2 shows successive crust of water waves approaching a narrow gap in here direction of travel of wave is traveling to the barrier, there is a gap, और जब भी इस तरह का गैप होता है causes a diffraction. अब जरा चेक करें दुल्ला क्या डायफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी. सर होएगा क्योंकि गैप चेंज होगा. काय गैप चेंज. सर आ तो है गैप बीच में. हाँ लेकिन कंडीशन क्या होती है वेवलेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल द गैप विड्थ. तो यहाँ सर पे वेवलेंथ नजर नहीं आया ग्रेटर. हाँ वेवलेंथ ज्यादा है और गैप विड्थ इज ठीक है. तो यू हैव टू थ्री सक्सेसिव वेव फ्रंट्स. तो हमने यहाँ पे बचे फर्स्ट ऐसे शो करते हैं वन और हैव टू मेजर द डिस्टेंस. ये वाला लेंथ आपने मेजर कर लिया विद द रूलर और उतने डिस्टेंस पे आप एक डॉट लगा दें. ये याद रखना है द वेवलेंथ मस्ट बी. ऑल्दो अभी आपको नहीं लग रहा होगा देता हूँ. दिस इज द वेवलेंथ मस्ट बी टू द इनकमिंग वेव. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट. On figure draw three crust of the wave that just passed through the gap in the barrier. क्या और थ्री मार्क्स है. आपने पहले चेक करना है डायफ्रैक्शन होगी कि नहीं होगी के लिए द कंडीशन. देन आपने सेमी सर्कल में लिख हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल्स का एक मार्क्स हो जाए. और फिर आपने वेवलेंथ ऑफ डायफ्रैक्टेड इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ कमिंग आर इक्वल. इनकमिंग वेव और डायफ्रैक्टेड वेव वेवलेंथ है दैट मस्ट सेम. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट. Next is question number 25. State a typical value of speed of sound in air. Speed of sound in air is 40 340. meters per second. Abdullah, state the range of frequencies that can be heard by सर healthy. 20 से लेकर 120. Oh, okay. नहीं Maida. सर नहीं सॉरी अल्ट्रासाउंड का क्या था 20,000 था ना. Yes. 20 to 20,000. हाँ सर मुझे स्पीड ऑफ एयर की रेंज बतानी है सिर्फ या ओवरऑल. यहाँ पे लिखा हुआ है state the range of frequencies that can be heard by healthy human ears. 0 to 20,000. जीरो भी सुन. 1. 20 to 20,000. तो अब्दुल्ला ने बताया था 20 120 सही था ना. अब्दुल्ला तो कह सकता है कि तक 20 22 20 किलो और 20,000 हर्ट्ज. अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला आवाज आ रही है. हाँ जी सर. हाँ जी सर. अच्छा ये यहाँ पे इन्होंने हेल्दी ह्यूमन ईयर्स लिखा. नेक्स्ट इज sound. A sound wave in air has a wavelength of 22 millimeters. This is the wavelength. Figure 6.1 represents a wavefront of this sound. These wavefronts are successive compression. Okay, wavefront जो है they're showing. Know that the distance between the two compression is wavelength. Okay, the wave is the now using your value for the speed of sound in A part 1, calculate the frequency of the sound wave. So you have to find out the frequency. So
तो सर इसके लिए विकल्प चाहिए होंगे। V equals F lambda. Lambda equals V by F. Oh, sorry. Find the frequency. तो फ्रीक्वेंसी इधर चला जाएगा और V by lambda कितनी दी इस क्वेश्चन 340 दी थी हमने एंड 340 divided by the wavelength. What is the wavelength, Abdul? यहाँ पे लिखते हैं distance between consecutive Cusps. compression या crust. In this case, it's a compression. The distance between consecutive compression lambda. So here the lambda is 22 millimeter. तो आपने लिखना है 20 10 raised power minus 3 for the milli. So next check करें 340 divided by lambda 22 10 power minus. Sir, 15454.5. 154 54 point. 5 1545.5. No, sir. 15,454.5. अब ठीक है Hmm. जी. so this is 1.5 10 raised to power 1 to 4 the unit of frequency hertz ठीक है next is on figure 6.1 draw a dotted line to represent three different rarefactions so that between compression have a rare की बचे अब आ रही है आवाज Hello? जी अब्दुल्ला की आवाज आ रही है आपको जी. जी सर। जब से अब्दुल्ला गया है बारिशें आज भी काफी ज्यादा सर मेरे ऊपर डाल दो सर। जब आए हुए थे बारिश नहीं सर मैं बस एक सेकंड कॉल आया उठा लूं। so next is state in term of both molecules and pressure what is meant by rarefaction Maida what is rarefaction term of both molecules Sir, and pressure sir, sir, some particles there are further away from each other, and the हाँ pressure and density is low. तो हम लिखते हैं at rarefaction Sir, नहीं show. देखें शो हो रही है No. Sir, मैं rejoin करती हूँ फिर. हो गया अब चेक करें
चेक करें आप सही है। सर आप बोलिए। Okay, so at rarefaction, the molecules are far apart. Far apart, or the molecule is at low pressure. Molecules exert low pressure. Next is compare the arrangement and motion of molecules in ice and in liquid. तो आप क्या कहेंगे? Ice में the molecules are regularly arranged and I vibrate about its, है ना? सर Molecule आइस में are together and water में they are spread apart, ऐसे कह सकते हैं। or they are spread apart. Ice में तो आप कह सकते हैं molecule are regularly arranged, regularly and vibrate about its और water molecules में क्या होता है? ये molecules are randomly are arranged randomly are arranged randomly and slide over each other and slide over ये अब्दुल्ला आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, तो ये क्वेश्चन था कि कंपेयर द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइस। अरेंजमेंट भी बतानी है एंड देयर मोशन। तो मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड एंड वाइब्रेट अबाउट इट्स पोजीशन, while in water molecules जी are arranged randomly slide over each other। अगर वो आपको कह दें कि ड्रॉ करके दिखाएं, फिर आपने सॉलिड में तो साइज ऑफ एटम या सर्कल्स का साइज जो है वो सेम रख, दे आर टचिंग। अगर लिक्विड का है, although they have a gap, still they are touching each other, जैसे से, जबकि gases में they are far apart or further। Next is an ice hockey rink has an area. Area is given. The ice has a thickness of this. The density of ice is 1. Calculate the mass of the ice on the ring। ये क्वेश्चन, you have to calculate the mass of ice on, कुछ इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी, mass of volume। तो mass इक्वल वॉल्यूम, और डेंसिटी मतलब mass equals the density, से लिखते हैं density, and the volume is area into height या thickness। तो density is 920, area is 100, h is the thickness या height 0.05, get the value of, ये वैसे, जी अब आ रही है सर। अच्छा, 920 into 1800 in 0.25, because we know that density is mass over volume, so mass equals density into volume, and volume is area into height। So area is given
height is given, just have to multiply them. Sir, 41,400. 41,400, that is kg. Okay, last question, मायदा, ये भी हम चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन आपको करवा देता हूँ. The G, sir. ice, the ice is at 0 degrees Celsius. To form the ice, water at 0 degrees was poured onto the floor of the ring and then frozen. The specific latent heat of fusion. Calculate the energy removed from water from ice at 0 degree. तो अब्दुल्ला क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? है कि नहीं? Hello, sir. जी जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहाँ? So यहाँ वो इस्तेमाल करेंगे specific heat capacity. टेम्परेचर इज सेम 2 वो डिग्री क्यों? सेल्सियस और यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जस्ट क्या हो रही है? देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट. देयर इज a change of state, but temperature is same. Temperature is constant. So this is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion. Whenever the temperature is same, but there is a change of state, and there is a change of state from calculate the energy from water, from liquid to solid. हाँ जी. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होगा Q equals latent heat of fusion 441400. Fusion is 3.310 raised to power 5. चेक करें. चेक कर लें. Sir, मैं कर रही हूँ. Sir, 1.3662 multiplied by 10 raised to power 10. 1.3 10 power 10 2. joules. Okay. So this is 1.4 10 raised to power 10 is the answer. ये ले मायदा कंप्लीट हो गया सर. क्या? Yes, thank you, sir. जी. मायदा और सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे. ठीक है अब्दुल्ला? Inshallah, sir. ओके, खुदा हाफिज. Allah Hafiz, sir. Thank After, you. sir.